आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जब शाओमी ने ना अपना पहला एयर प्योरीफायर रिलीज किया तो एक बहुत ही कंफ्यूज रिएक्शन मुझे मिला एक व्यूअर से। उन्होंने बोला कि भाई साहब क्या है ये, शाओमी कुछ भी बना देता है क्या? टुडे आई वुड लाइक टू आंसर दैट क्वेश्चन विद इवन मोर कन्विक्शन। ये ज़रूरी नहीं है कि कुछ भी बना देता है। हाँ, शाओमी सब कुछ बना देता है। शाओमी बड़ी यूनिक कंपनी है और बहुत ही यूनिक उसका बिजनेस मॉडल है और जिस तरीके से वो कुछ करती है शायद और कंपनी नहीं करती। शाओमी इज़ नोन टू एंटर अ कैटेगरी विद अ झटका। और झटका क्या है? Always a good product, good features, and it's priced about 10 to 30% cheaper than all others. सब कुछ हिल जाता है. Everything shakes up in that category. They started with smartphones, took over that market, then fitness bands, then air purifiers. फिर उन्होंने big disruption किया. कहाँ पे? Television market में. They were sold out for such a long time when they launched their first Mi TVs in 2018. Xiaomi के air purifiers are always sold out in winter. And now they are trying to use the same strategy in the laptop market. और टाइमिंग भी बहुत ही अच्छी है इनकी बिकॉज इस लैपटॉप के साथ दे आर एक्चुअली रिलीजिंग इट एट अ टाइम, वेरी क्रिटिकल टाइम, जब लैपटॉप्स जो है बहुत ही हमारे को समझ आ गया कि वो कितने ज़रूरी हैं एट टाइम्स लाइक दिस. मोर एंड मोर पीपल आर लुकिंग फॉर लैपटॉप्स टू बी प्रोडक्टिव फ्रॉम होम एंड सो मेनी अदर वेज. सो दे हैव लॉन्च्ड अ सीरीज ऑफ लैपटॉप्स इन इंडिया. सबसे बड़ा सवाल ये है, डिड दे डू इट? क्या फिर से शाओमी ने राइट लैपटॉप निकाला है टू शेक अप द कैटेगरी और कॉम्पिटिशन को शायद डरा दिया है कि नहीं डराया है? Let's take a look at this one. ये है Mi Notebook 14 Horizon Edition. शुरू करते हैं with the design. बहुत minimalistic looking design है, metallic look है. Actually, it is a magnesium build. You know, it's not as well built as I expected. I mean, it's not a Dell or an HP or an Apple quality. जो fit है इसकी. It resembles an Apple MacBook. Xiaomi loves Apple. ये तो I think हम सबको पता है. Very obvious for a very, very long time. Surprisingly, there are no logos on the outside at all. Maybe that's how you can tell कि ये Mi का notebook है. No logo, so Mi laptop. Then there are 3 USB Type A ports, 1 Type C, a combo audio port और HDMI out है कुछ higher variants में. बहुत ही पतले thin bezels हैं, I mean super thin. 35.6 centimeter full HD display, matte anti-glare display है. It's okay, sharp enough, पर जो colors हैं थोड़े से off हैं. I would not touch up my photos or do any photoshopping relying on this one as my color correction device. Scissor mechanism का keyboard है with very decent travel of 1.3 mm key travel है, but the keyboard fit and finish और जो plastic उन्होंने use किया is not that great. थोड़ा सा cheap type है. I was expecting more finesse here. The keyboard should be a good looking one. After all, type इसी पे करना है. Trackpad जो है is good. थोड़ा सा soft सा है in behavior and clicks, and it doesn't support Windows precision drivers. अब specs के बारे में बात करते हैं. You can either get an i7 or an i5 processor on this. GPU जो है Nvidia का GeForce MX350 है with 2 GB of DDR5 RAM और 8 GB of DDR4 RAM इसमें आपको मिल जाएगा. That means, and I'm going to answer this question because I know a lot of people are going to ask this, this is not meant for gaming despite Xiaomi claiming it is. It will run some games. Low setting में तो कोई भी आजकल लैपटॉप चला ही देता है games को, and of course it will heat up then noticeably after a while. So not suggested for gaming. You can pull off some video editing or light photoshopping, nothing too major though. The 2 storage options are SSD, so that's good. The laptop is very much meant for everyday office use scenario, but then comes shocker number 1. There is no webcam on this. मुझे जहाँ तक कहानी पता चली है, ये जो है ना स्पेशली मेड फॉर इंडिया लैपटॉप्स हैं और जब इसको ये लोग डिज़ाइन कर रहे थे, इसकी जो इनोवेशन चल रही थी, लॉकडाउन एंड वर्क फ्रॉम होम उस टाइम जो है सोचा भी नहीं गया था. लेकिन नो वेबकैम, big mistake. They bundle in a USB webcam, but what a fiddly सा है to use to attach it on. Then you need to remember to carry it around, and then you don't have a bag with it. So how do you carry it around? Plus, it has design-based limitations, and the quality is pretty sad. Shocker number 2. कीबोर्ड की कोई बैकलाइटिंग नहीं है. ये एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि वी ऑल वर्क इन डिम लिट रूम्स, वी वर्क एट नाइट एंड दिस वुड बी इम्पॉसिबल on this one. Then it has a 46 watt hour battery that charges very decently with a 65 watt charger, and it runs pretty good for anyone using it for document work, browsing, once in a while थोड़ा सा media consumption कर ली तो battery life जो है आपको 7-8 घंटे तो मिल ही जाएगी.
तो क्या मुझे पसंद आया? What are the pros? Nice form factor, easy to carry around, looks minimal and clean look है इसकी. Optimal performance for everyday office tasks and home uses. Familiar Windows 10 environment and very very clean. इसमें कोई Xiaomi का junk नहीं है. This is a big one. No ads, no spam. Only 2 pieces of software from Xiaomi and those actually help you. What didn't I like? Fit and finish can be improved drastically. No webcam. Keyboard is not backlit. RAM cannot be upgraded. Speakers are not impressive and not built for gaming at all. Overall जो इसका i7 variant of the machine जो है ना, I can recommend that to someone who will work on it for presentations, browse the internet and maybe some document creation and browsing and maybe थोड़ा सा आप अगर edit करना चाहते हैं छोटा मोटा HD level का अगर कोई video. Anything more in this laptop will become a bit overwhelmed, मतलब नहीं कर पाएगा. It's a pretty nice looker. Good performer, no webcam, no backlit keys. The fit is okay-ish and the finish could do with an upgrade. At 55,000 rupees, will it shake things up? Okay, I think not. I think हम लोग सब बहुत expect कर रहे थे from Xiaomi and they did not deliver with this one. यहाँ तो इसकी प्राइस होनी चाहिए थी around 40 to 42,000 rupees. यहाँ इसका जो feature set है, that should have been much way better. I think Xiaomi needs to go back to the drawing board and come up with something far more disruptive, something far more game-changing, something जो actual झटका देती है जो हम लोग Xiaomi से expect करते हैं. But maybe you think differently. So here's the $1 million question, or should I say, here's the 55,000 rupee question. ये है Xiaomi का big bang entry to disrupt the laptop market. Did they get it right? Would you buy it? ये है सबसे बड़ा question. Of course, they need big sales. So would you buy it? Would you recommend it to someone else who wanted to spend about 55,000 rupees on a laptop? Or 55,000 rupees में क्या आपके हिसाब से there are better laptops out there? Remember, I'm waiting for you in the comment section. The comment section is now officially open. This review is now officially closed.